Hi, my name is Sparsh I got to experience Sambhav in 2016. So मैं थोड़े experiences आपके साथ share करने वाला हूँ आज. तो स्टार्टिंग वही सब लोगों की तरह कि चलो एक रिट्रीट बनता है, एक ट्रिप हो जाएगा बढ़िया before we start preparing for the main exam again. And दोस्तों के साथ थोड़ा मस्ती हो जाएगी. एंड परोक्ष सर के साथ मैं योगा मेडिटेशन सेशंस लगाता ही था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है योगा मेडिटेशन एंड दोस्तों के साथ फाइन, तो और लोनावला भी देखने को मिल जाएगा, तो लेट्स गो फॉर इट. बट आई केम बैक एज अ totally new person. I had this wide angle of looking at life, you know. मैं उस एक हफ्ता 10 दिन में मैंने लाइफ को उस एंगल से देखा जिससे बहुत कम लोग देख पाते हैं, यू नो. द वे वी आर लिविंग राइट नाउ इट्स टोटली डिफरेंट. वो 10 दिन में ऐसा लगता है कि कोई और ही दुनिया में आ गए हैं. और it basically helps you connect with yourself, you know, to take care of yourself. Like mental health awareness लोग सब बोलते हैं ये वो, तो बट वो है किस लिए? क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, you know. तो basically it helps you find yourself. I think it actually helped me find myself, to you know, to find that thing inside me, that drive inside me to do what I want to do. और आई गेस वही एक चीज़ होती है जो हमें लाइफ में चाहिए होती है आगे, टू फेस एनी थिंग, यू नो. अभी एग्ज़ाम्स हैं, आगे लाइफ में और प्रॉब्लम्स आएंगे और चैलेंजेस आएंगे, एंड यू हैव टू फेस इट समडे. तो आई गेस एंड मोर ऑफ कनेक्टिंग spiritually as well. I mean, getting to know so much about the spirituality and what all these mantras mean. That was also another amazing experience that I had. और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, you know. It has to be in that time, in that place, in that moment. And when you experience it, you actually get to know it. I mean, you gain everything from that. So I urge you guys to, you know, go for it. Go for Sambhav, experience it. It's like at such stage of your life, if you get to experience something like this, you should not miss it at all. Because I was going to miss it, but I didn't. And I'm very, very thankful that I got to experience it. And I'm still reliving the moments right now. I mean, and I want to go on a Sambhav trip again. Thank you guys. Enjoy Sambhav.